बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद मुनीर अहमद। कोर्स है कॉस्ट अकाउंटिंग। आज हम इस कोर्स के यूनिट 3 जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कंप्लीटिंग द कॉस्ट साइकिल एंड कॉस्ट शीट के सेकंड प्रोग्राम, जिसका टाइटल है जॉब ऑर्डर कॉस्ट अकाउंटिंग, के बारे में डिस्कस करेंगे। इस यूनिट के प्रीवियस प्रोग्राम में हमने जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम के बारे में डिस्कस किया कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम क्या है, जॉब ऑर्डर कॉस्ट अकामुलेशन कैसे की जाती है, जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने का क्या तरीकाकार है। इस प्रोग्राम में हम अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, इसी तरह कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ अप्लाइड ओवरहेड्स, कंप्लीशन ऑफ जॉब एंड डिलीवरी ऑफ जॉब से रिलेटेड क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होती हैं। Dear students, when we talk about the completion of job order costing, so we have to pass 9 type of different entries. As you are viewing on the screen, the first type of entries regarding the material purchased. The second one is material issued to production. The third one is material returned, if any return of material occurred. The fourth one is factory labor incurred, factory labor cost distributed, and the factory overhead costs incurred. The seventh entry is estimated factory overhead cost applied to jobs, jobs completed, and completed jobs delivered or sold. So these 9 types of different entries are recorded while completing the job order costing process. इसमें अगर हम इन एंट्रीज को कैटेगराइज करें, so there are 3 major categories of these entries. The first category is recording the materials related entries. The second category is regarding the labor cost entries, and the third one is factory overhead cost related entries. And at the end, we will pass the entries of completion of job and the delivery of job. So these entries are passed under the job order costing system. So let me review different entries कि किस स्टेज पर क्या एंट्री पास की जाती है, कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, विच अकाउंट्स आर टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट्स आर टू बी क्रेडिटेड. सो लेट वी रिव्यू द फर्स्ट एंट्रीज रिगार्डिंग द परचेज ऑफ मटेरियल. जब भी हम मटेरियल परचेज करते हैं, इर्रिस्पेक्ट ऑफ दिस कि वो मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल हो, इनडायरेक्ट मटेरियल हो, सेल सप्लाईज हों या ऑफिस सप्लाईज हों, तमाम का तमाम मटेरियल परचेज करने के बाद वेयर हाउस में प्लेस कर दिया जाता है. अब किसी भी किस्म का मटेरियल परचेज किया जाएगा, उसके लिए
हम एक ही एंट्री पास करेंगे, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल हो या इनडायरेक्ट मटेरियल हो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, परचेज ऑफ मटेरियल रिलेटेड एंट्री विल बी इफ वी परचेज्ड मटेरियल costing rupees 2 lakh purchased on credit basis. So the entry will be material account debited with the amount of rupees 2 lakh and the account payable account will be credited with the amount of rupees 2 lakh. So in this way, cost of material purchased will be recorded. After the purchasing of material, each department send requisition to storeroom or warehouse according to the requirement of the job. अब यहाँ हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि मटेरियल इशू डायरेक्ट किया गया है या इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया गया है। डायरेक्ट मटेरियल इशू करने से रिलेटेड सेपरेट एंट्री पास की जाएगी, जबकि इनडायरेक्ट मटेरियल इशू करने से रिलेटेड डिफरेंट एंट्री पास की जाएगी। सो इन दिस एग्जाम्पल, इफ यू सी मटेरियल कॉस्टिंग रुपीज़ 1,90,000 was issued to job number 112, which comprised direct material costing rupees 1,85,100 and the indirect material costing rupees 4,900. So the entry will be work in process account debit for the direct material with the amount of rupees 1,85,100 and the factory overhead control account debit with the amount of rupees 4,900 and the material control account will be credited with the amount of rupees 1,90,000. So जब भी हम डायरेक्ट मटेरियल इशू करेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल वर्किंग प्रोसेस अकाउंट डेबिट करेंगे, और जब भी इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया जाएगा तो उसके लिए फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट किया जाएगा। और इसी तरह अगर सेल सप्लाईज होती या ऑफिस सप्लाईज इशू की जाएं तो सेल सप्लाईज के लिए सेलिंग एक्सपेंस डेबिट करेंगे और ऑफिस सप्लाईज के लिए ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस डेबिट करेंगे और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। The next entry is recording the return of material to warehouse. Material costing rupees 4,000 was returned by production department to warehouse department. So in this case, the previous entry will be reversed. Material account debit rupees 4,000 and working process account credit with the amount of rupees 4,000. Dear students, return of material की एंट्री रिकॉर्ड करते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी हम रिटर्न करेंगे मटेरियल तो ये आपको जान लेना चाहिए कि मटेरियल डायरेक्ट रिटर्न किया जा रहा है या इनडायरेक्ट मटेरियल रिटर्न किया जा रहा है। इन केस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न, द मटेरियल कंट्रोल अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिटेड। यानी जो हमने मटेरियल इशू करते हुए एंट्री पास की थी उसी एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे। और इन केस अगर इनडायरेक्ट मटेरियल रिटर्न किया जाएगा तो टू वेयर हाउस we will debit material control account and factory overhead control account will be credited. Further, अगर मटेरियल
सप्लायर को रिटर्न कर दिया जाए ड्यू टू नॉट अकॉर्डिंग टू सैम्पल और नॉट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस और डैमेज्ड मटेरियल अगर सप्लायर हमें इशू कर देता है तो उस सूरत में वेंडर अकाउंट डेबिट या अकाउंट पेबल अकाउंट डेबिट और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। यानी जो परचेज करते हुए हमने एंट्री रिकॉर्ड की थी उसी एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे। सो नेक्स्ट एंट्री विल बी recording the material costing rupees 8,000 was returned to supplier. The account payable account will be debited with the amount of rupees 8,000 and material control account credited with the amount of rupees 8,000. Now, how these transactions will be posted in the ledger accounts? सबसे पहले मटेरियल कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में जहाँ जहाँ जब मटेरियल को डेबिट किया गया हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। 2 लाख से मटेरियल डेबिट हुआ जब हमने परचेज़ किया, 4,000 से अगेन डेबिट हुआ जब रिटर्न किया गया टू वेयर हाउस, एंड मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट किया गया एट द टाइम ऑफ issuance of direct material to department according to the requisition. So material account will be credited with the amount of 1,85,100. FOH control account की वजह से material control account credit हुआ 4,900 when we issued indirect material, and we also returned the material to supplier with the amount of rupees 8,000. So all types of entries will be recorded in the material control account. Now the closing balance of material control account is 6,000. The next account will be prepared of working process account. Working process account is debited with the amount of rupees 1,85,000 and is credited with the amount of rupees 4,000. The closing balance of working process account is 1,80,000. The next account is account payable account. Account payable account is credited with the amount of 2 lakh and debited with the amount of rupees 8,000. The balance of account payable account is 1,92,000. The next account is FOH control account, that is debited with the amount of rupees 4,900. After recording the entries of material cost, we will record the accounting for labor cost. The first entry of payroll will be to record the accrual of total payroll in जनरल जर्नल। कि सबसे पहले हम टोटल पेरोल को रिकॉर्ड करेंगे कि टोटल पेरोल कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, सेल्स सैलरीज that is regarding the sales department, and the office salaries that belongs to administrative department. So all types of labor cost is accumulated and recorded under the head of payroll according to the data given by timekeeping department. So सबसे पहले एंट्री जो हम करेंगे पेरोल से रिलेटेड, उसमें टोटल पेरोल को रिकॉर्ड करेंगे कि टोटल पेरोल ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन कितनी बनती है। उसके लिए पेरोल कंट्रोल अकाउंट विल बी डेबिटेड with the amount of rupees 1,20,000, and if there is any type of deduction given in the question, so each type of deduction will be deducted from the total payroll. Like here
income tax deduction payable account will be credited with the amount of rupees 6,000. Provident fund deduction payable account will be credited with the amount of rupees 12,000, and the accrued payroll account will be credited with the amount of rupees 1 lakh and 2,000. So the rest of amount will be recorded as the accrued payroll account. The next entry of payroll will be regarding the classification of payroll. Classification means कि टोटल पेरोल जो हमने रिकॉर्ड की है उसको क्लासीफाई करेंगे कि इस पेरोल में कितनी पेरोल डायरेक्ट लेबर इन्वॉल्व है, कितनी कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर इन्वॉल्व है, कितनी सेल्स सैलरीज इन्वॉल्व हैं और कितनी हमारी ऑफिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड सैलरीज इन्वॉल्व हैं. तो उसके लिए जिस डिपार्टमेंट की जितनी सैलरीज बनती होंगी उस डिफरेंट हेड्स में हम रिकॉर्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन क्लासिफिकेशन ऑफ पेरोल. So here in this example we have direct labor of amounting rupees 92,800. So for the direct labor we will debit work in process account, that is rupees 92,800. For the indirect labor we will debit factory overhead control account with the amount of rupees 7,200. And for the administrative salaries we will debit the office expense, or you may write also the administrative expense, that is rupees 12,000. And for the sales salaries, that is belong to the sales department, we will debit the marketing expenses, and you may also write the selling expenses with the amount of rupees 8,000. And the payroll control account will be credited with the amount of rupees 1,20,000. So in this way we will classify the payroll account. After that, after the classification of labor cost, we will record the entry of payment of payroll कि जितनी हमने accrued payroll रिकॉर्ड की थी उस accrued payroll की अब हम पेमेंट करेंगे. That is very simple entry, and the accrued payroll account debited with the amount of rupees 1,02,000 and cash account will be credited with the amount of rupees 1,02,000. और अगर चेक के थ्रू पेमेंट होगी then we will credit the bank account instead of cash account. After recording all transactions of labor cost, we will post the whole transactions of labor in the respective general ledger account. So first of all we will prepare working process account, and the working process account is debited with the amount of rupees 92,800 due to cost of direct labor. The next account will be payroll account. Payroll account is debited with the amount of rupees 6,000, 12,000, and it is credited with the amount of rupees 92,800, 7,200, 12,000 and 8,000, and the accrued payroll is 1,02,000. So in this way there will be nil balance of payroll account, क्योंकि जितनी अमाउंट डेबिट्स हैं उतनी ही अमाउंट हमारी क्रेडिट्स हैं. The next account we will prepare FOH control account that is debited with the amount of rupees 7,200. Accrued payroll account will be credited and debited with the same amount 1,02,000 and 1,02,000. Income tax deduction payable account credit with the amount of rupees 6,000, and in the last provident fund deduction payable account credited with the amount of rupees 12,000. After passing the
entries regarding the cost of labor, we will record the cost of third component, that is factory overheads. फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड हम अप्लाइड ओवरहेड्स की एंट्री करेंगे, एट द एंड एक्चुअल एफर्ट्स को रिकॉर्ड करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल सी कि वी अप्लाइड greater efforts or lesser efforts than actual efforts. So, in this connection, we will calculate the over applied or under applied efforts and close the applied efforts control account. So, first entry regarding the efforts will be incurrence of actual efforts for the prepaid factory rent. We will debit factory overhead control account amount rupees 6,000 and prepaid rent account credited with the amount of rupees 6,000. And for recording the adjustment for prepaid factory insurance, we will debit factory overhead control account and credit prepaid insurance account with the amount of rupees 3,000. Then for the adjustment for depreciation on factory building and machinery, we will debit factory overhead control account and credited accumulated depreciation account with the amount of rupees 12,000. Then for the payment of utility expenses of factory, we will debit factory overhead control account and credit the cash account of rupees 2,000. So, in short, if we summarize all types of एक्चुअल एक्सपेंसेस के जितने भी एक्चुअल एफर्ट्स हमारे इंकर होंगे, उन तमाम एक्सपेंसेस के लिए हम फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो भी रिस्पेक्टिव एक्सपेंस होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे. मींस फॉर द इंश्योरेंस वी विल क्रेडिट प्रीपेड इंश्योरेंस, फॉर द रेंट वी विल क्रेडिट प्रीपेड रेंट, फॉर द डेप्रिसिएशन वी विल क्रेडिट अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, and for the utilities bill payments we will credit the cash account. और इन तमाम के तमाम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए जो अकाउंट डेबिट किया जाएगा वो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट हम यूज़ करेंगे. आफ्टर रिकॉर्डिंग द एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस वी विल रिकॉर्ड द अप्लाइड ओवरहेड्स. सो फॉर रिकॉर्डिंग द अप्लाइड ओवरहेड्स, लेट्स सी what will be the entry. So, if the applied factory overhead cost based on 348 machine hours at predetermined rate of rupees 100 per machine hour works out to rupees 34,800, which was charged to job number 112. So, in this connection we will debit work in process account debit rupees 34,800 से and factory overhead applied account credit with the amount of rupees 34,800. So, जब भी हम applied overhead record करेंगे तो working process account debit करेंगे और applied overhead control account को credit करेंगे. After recording the transaction in general journal, we will post them into general ledger and the efforts control account prepare करेंगे. That is debited with the amount of rupees 6,000 for prepaid rent, 3,000 for prepaid insurance, 12,000 for accumulated depreciation and utility bills payment for 2,000. So, total actual efforts we incurred amounting to rupees 23,000. Next is efforts applied account, that is credited with the amount of rupees 34,800. After recording the actual and applied efforts, we will calculate and we will adjust the efforts and calculate either we applied over efforts or under efforts. Efforts factory overheads जो हमने अप्लाई किए हैं वो 34,800 के हैं और जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हमने इंकर किए हैं वो सारे के सारे मिला के हमारे पास 35,100 के हैं. So, if we applied
lesser FOH than the actual FOH, so we will have the balance of applied factory overhead, that is under applied FOH amounting rupees 300. और अगर applied FOH हमारे exceed कर जाते actual FOH से, then we have balance of FOH that is known as the over applied FOH. After calculating the balance of over or under applied FOH, we will adjust by passing the entry cost of goods sold debit with the amount of rupees 300, factory overhead control account credit with the amount of rupees 300. So in case अगर हमारे पास over applied FOH आ जाते, means कि applied FOH ज़्यादा होते और actual हमने कम incur किए होते, then we have over applied FOH, और इस केस में इसी एंट्री को हम रिवर्स कर देते, मीन्स कि फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट हम डेबिट करते और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट को क्रेडिट करते. आफ्टर रिकॉर्डिंग दी ऑल टाइप ऑफ एंट्रीज, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर एंड कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, जब ये सारी की सारी कॉस्ट इंकर्ड हो जाती हैं, देन वी विल कंप्लीट द जॉब. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जॉब वी विल रिकॉर्ड द एंट्री फॉर द कंप्लीशन ऑफ जॉब. ये जितने भी हमने वर्किंग प्रोसेस इंकर किए हैं, इसको कॉस्ट ऑफ जॉब में ऐड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ जॉब में ट्रांसफ़र कर देंगे, और कॉस्ट ऑफ जॉब से रिलेटेड जो एंट्री पास की जाएगी उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि कितनी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इंकर हुई है, कितनी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंकर हुई है, और FOH अप्लाइड की अमाउंट कितनी हमने इंकर की है. सो टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब इज़ 3,08,700. फॉर रिकॉर्डिंग द कॉस्ट ऑफ completion, the entry will be finished goods account debit with the amount of rupees 3,08,700 and the working process account credited with the amount of rupees 3,08,700. So in this way we will record the completion of job. At the end we will record the entry regarding the delivery of job. For the delivery of job we will pass two entries. पहली एंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफ़र करने की, जिसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट करेंगे 3,08,700 से, एंड फिनिश गुड्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे विद द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 3,08,700. एंड द सेकेंड एंट्री विल बी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कस्टमर्स, जिसके लिए अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 3,70,000 के जो हमारी सेलिंग प्राइस होगी, एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट विद द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 3,70,000. और जब कस्टमर से हमें कैश रिसीव हो जाएगा उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट 3,70,000 से एंड अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट विद द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 3,70,000 से. सो इन दिस वे वी विल रिकॉर्ड द कंप्लीशन ऑफ जॉब एंट्रीज. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस प्रोग्राम में हमने ये सीखा कि कॉस्ट ऑफ जॉब से रिलेटेड क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है, कौन कौन सी कॉस्ट इंकर होती हैं, और इन कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है. कॉस्ट ऑफ मटेरियल से रिलेटेड क्या एंट्रीज पास की जाएंगी. देन वी लर्न कॉस्ट ऑफ लेबर से रिलेटेड क्या एंट्रीज होंगी, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड क्या एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएंगी, और एट द एंड वी डिस्कस्ड कि हाउ टू ट्रांसफर द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड FOH इनटू कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड गुड्स. और जब हम गुड्स सेल कर देते हैं तो उस सूरत में क्या एंट्रीज पास करते हैं, ये हमने आज के प्रोग्राम में डिस्कस किया. उम्मीद है आप इस प्रोग्राम को बखूबी समझ पाए होंगे. नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी. अपना
और अपने गिरदो नवा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।